Hello students, good morning. So in previous class we discussed about the carbon resistors and the property of superconductivity, and as we discussed the superconductivity always observed in case of low temperature, because in case of low temperature some metals, alloys, oxides and poor conductors give their zero electrical resistance. Okay, so that's why we study the superconducting property. Okay, and also we studied about the color code resistor, that formula that I tugged to remember, that is bright boy, rave over young girl, but veto getting weight. Okay, so first two color indicates to digit, third color indicates to multiplier, and fourth color that is the limit of accuracy or tolerance. Okay, so in this lecture we mainly discuss about the Kirchhoff's law and its application to a Wheatstone bridge. Okay, so generally in electrical circuit we use the Kirchhoff's law, but one can ask the question, sir, in electrical circuit we definitely use the Ohm's law in order to measure the relation between current and voltage. Okay, current and voltage relation pai ame generally Ohm's law use karu. So why there is a need of Kirchhoff's law? Kirchhoff's law need kahinki asuchi? So generally the answer to this question that I can say, so if I consider a simple circuit, okay, if I consider a simple circuit, then we can use Ohm's law. Okay, because Ohm's law can easily stated basing upon the simple electrical circuits. Okay, but the Kirchhoff's law is used to measure the relation of voltage and current in case of a complex circuit. Okay, देखो पहले कौन पढ़िबा हमें आज Kirchhoff's law. Okay, and Kirchhoff's law, it is mainly used to solve or to solve complex electrical circuit. Complex electrical circuit को solve करिबा पई हमें कहार यूज करिबा ना Kirchhoff's law रे यूज करिबा. So Kirchhoff's law mainly taken into two different types. One is called Kirchhoff's first law or Kirchhoff's current law, or it is called Junction law. Okay, it mainly Kirchhoff's law mainly taken into two statement, that is first law and another one is second law. Okay, first law, or that is called Kirchhoff's current law, Kirchhoff's current law, or we can say that is Junction law. First law टाका में तीनटा टाइप रे स्टेटमेंट दे परिबा. Kirchhoff's current law ताको तमे सिंपली कहि परिबो KCL. ओके, Kirchhoff's current law बा Junction law. ओके, सेकंड टाका में कहू जे सेकंड लॉ को सर कौन कह जाए पिले ना Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law मतलब कह जाए KVL. So one is KCL, another one is KVL. Okay, बाय जेटा का मैं कहि परिबा लूप लॉ. ओके, बाय एटा को अदरवाइज कह जाए लूप लॉ. Kirchhoff's voltage law बाय जेटा मैं कहू जे लूप लॉ. Okay, so there are two different laws that we use to measure the relation between voltage and current, and we can use the in order to use the complex electrical circuits. Okay, so let's discuss what are the two laws states. So let's discuss Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Okay, so first law is called Junction law. So what is Junction law? Okay, KCL, or that is Junction law. Junction law states that for any electrical circuit, the net current at the junction is zero. जदि हमें जेकोनोसी गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑब्जर्व करिबा, गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट केस रे जदि हमें गोटे जंक्शन पॉइंट कंसीडर करे, जंक्शन पॉइंट माने कोन बिले जो पॉइंट रे कि दुई तीनटा वायर जॉइंट हेइथिबो.
ओके सेटा कह जाए जंक्शन पॉइंट जब आम जंक्शन पॉइंट रो करेंट मेजर करबा सो नेट करेंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0 ओके सो सिंपली वी कैन से in case of an electrical circuit the net current at any junction of an electrical circuit is 0. Electrical circuit is 0, or we can say sum of the currents at any point, or we can say the algebraic sum of the current meeting at one point is 0. Okay, algebraic sum of the currents meeting at one point is 0. ओके जखन से जंक्शन पॉइंट रे टोटल करंट रो वैल्यू केते आसे पिले 0 आसे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 फॉर एनी जंक्शन द टोटल करंट इज 0 ओके सो algebraic sum of the currents at any point of an electrical circuit of any point here we can add the some line at one point of an electrical circuit is 0. Okay, so that is Kirchhoff's current law. So let's prove this statement. Okay, मानकर पिले जो आम कहूचे गोटे एनी पॉइंट आम एनी जंक्शन पॉइंट गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे कंसीडर करवा जो एनी जंक्शन पॉइंट को मेजर करने सपोज ये जो करेन्ट रो वेरिएशन आसूची से करेन्ट रो वेरिएशन आम ये टाइप लिखा मनकर गोटे पॉइंट नहीं गली ओ जो ओ पॉइंट को किसी करेन्ट अच्छी इनकमिंग आउ किसी करेन्ट अच्छी पिले आउट गोइंग ओके मनकर पिले ये टाइप मोर करेन्ट्स रो स्ट्रक्चर अच्छी जेकोसी जंक्शन पॉइंट को ओ को ओके मनकर जो करेन्ट गुड़ाक अच्छी वैल्यू दे दियो I1 सपोज दैट इज I2 I3 I4 and this is I5 okay some currents are incoming and some currents are outgoing okay so in case of Kirchhoff's current law incoming current that you have to remember that incoming currents are general taken as positive okay incoming currents are taken as positive जति कि पिले करंट इनकमिंग आसुथबो से करंट को पॉजिटिव हाउएवर आउटगोइंग currents are taken as negative इनकमिंग करंट को पिले कौन करवा पॉजिटिव कंसीडर करवा आउटगोइंग करंट को पिले कौन कंसीडर करवा नेगेटिव कंसीडर करवा ओके प्रूफ करवा आस ताले कौन आसुची प्रूफ ऑफ Kirchhoff's current law proof okay so in order to prove the Kirchhoff's current law for a junction O okay sir for junction O so what is the statement the junction O is at the junction O there is some current value is incoming and some current value is outgoing but the law says at the junction the total current is 0 okay so at the junction O I can write summation of I equals to 0 but what is the value of current I1 is incoming so that's why it is positive I2 is outgoing that why that is negative current I3 that is also outgoing that is also negative current I4 that is incoming okay moving towards the junction away from the junction negative towards the junction positive
I4 minus I5 equal to 0. That is the total current at the point O. So that take all the negative value to the other side of the equation. So I1 plus I4 equal to I2 plus I3 plus I5. Okay. So I1 plus I4, that is we can write, that is I incoming. देख पिले कौन अच्छी एटा इनकमिंग करेंट जो राइट साइड रोचे इक्वेशन रो एटा पिले कौन करेंट ना आउटगोइंग तमाने एठी भी हम गोटे स्टेटमेंट पाई परलु जे टोटल इनकमिंग करेंट एट द जंक्शन द टोटल इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट. सो अनदर स्टेटमेंट दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द प्रूफ ऑफ द Kirchhoff's current law, that is the total incoming current at any junction for any junction of an electrical circuit okay, the total incoming current is equal to total outgoing current. Total incoming current is equal to total outgoing current. Total incoming current पिले total outgoing current सहित समान आसीबो. बुझिला Kirchhoff's current law. Then comes to Kirchhoff's voltage law. So let's measure Kirchhoff's voltage law. Okay, VL, that I am going to say loop law. Okay, so what does the loop law says? Loop law says for any closed mesh, the total potential difference across the circuit or total voltage for a closed mesh is 0. Okay, for any closed mesh, the total potential difference or total voltage for any closed mesh, the total voltage, okay, right, the total voltage is 0. Okay, so total voltage for any closed mesh, that equals to 0, or you can say the potential difference across the all elements and EMF of the source for any closed circuit is 0. Okay, or we can write the potential difference across all the elements and EMFs, all the elements and EMFs across elements and EMFs for an electrical circuit, the total potential difference across all the elements and EMF for an electrical circuit, any closed electrical circuit. Okay, for any closed electrical circuit, for any closed electrical circuit must be 0. Okay, केमती लिखि परिबा पिले ना summation V equal to 0. The total voltage for a closed mesh or the total potential difference for all elements and EMF must be equal to 0. ओके पिले याको प्रूव करिया पे हमु किछि साइन कन्वेंशन रो हेल्प दरकार, किछि साइन कन्वेंशन रो हेल्प दरकार. बुझिला पिले Kirchhoff's voltage law. देखो पिले Kirchhoff's voltage law रो प्रूफ पई हम किछि साइन कन्वेंशन रो हेल्प नबा. व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? ओके देखो पिले साइन कन्वेंशन
Okay, so when we take the moment of the resistance across the current, देख पे दुईटा पॉइंट नेली, गोटे ए आ गोटे बी, करंट केते आसुची मनकर I. Okay, when we move across the resistor along with the current, जब मैं current रो direction ले जब मूवमेंट करूचे, current रो direction जब मैं A रू B को मूवमेंट कर ली पिले, जो direction लेके मोर current flow होची, एटी जो potential difference टा आसीबो, that equals to minus IR. Minus IR. So across the current or across the resistor, when we move along the direction of current, then the potential difference is negative. Potential difference pile kon asibo? First sign convention is this one. Second sign convention pile kon asila iti? When we move across the resistor but opposite to the electric current. Okay, जदि हमें पहले current रो opposite रे movement करिबा, current रो opposite रे जदि हमें पहले movement करूचे, suppose हमें कहूचे current रो जो direction अच्छी, जो current रो direction अच्छी पहले suppose I अच्छी, हमें movement करिबा पहले A रू B को across the resistor movement करले opposite to the direction of current. So in such case potential difference is taken as positive. Potential difference को कौन निया जो पिले positive. Okay, so when we move across the resistor opposite to the electric current, then potential difference is positive, and when we move across the resistor along the current, the potential difference is taken as negative. Second thing, when we take the, this one is the electric element case रा में टाइप रो, जब हम EMF नवा पिले, जब EMF रा में negative रो positive आड़ को movement करूचे, okay, negative पोल रु पॉजिटिव पोल आड़ को मूवमेंट करूचे. ओके पिले नेगेटिव रु जेतले पॉजिटिव को मूवमेंट करिबा सेतले जो पोटेंशियल डिफरेंस आसीबो दैट इक्वल्स टू प्लस ई. बुझेला. सो व्हेन वी मूव द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अक्रॉस एनी सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव. ओके पिले ए रु बी को मूवमेंट करली ता माने नेगेटिव रु पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आसिला पॉजिटिव. सेकंड थिंग्स रा कोन आसीबो? व्हेन वी टेक अपोजिट, ओके, जदि हम प्लस रु माइनस को पिले मूव करबा, प्लस रु माइनस को, ताल सेठी जो पोटेंशियल डिफरेंस आसीबो पिले नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बा नेगेटिव ईएमएफ. ओके, व्हेन वी मूव पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, देन द ईएमएफ इज नेगेटिव. प्लस रु जेतले माइनस को मूवमेंट करबा नेगेटिव ईएमएफ, नेगेटिव रु जेतले पॉजिटिव को मूवमेंट करबा पॉजिटिव ईएमएफ. सो दिस इज द टू साइन कन्वेंशन दैट वी हैव टू यूज इन केस ऑफ द किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, सो आसो देखिबा प्रूफ केमती करबा किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को. प्रूफ ऑफ केवीएल. देख पे गोटे इजिली लूप, गोटे इजी लूप मेजर करवा ये मनकर इजी लूपटा ये टाइप नौ गोटे पॉजिटिव टर्मिनल गोटे नेगेटिव टर्मिनल, बहुत इजी सर्किट गोटे ड्र करवा क्लोज लूप गोटे. ओके, सपोज पे जो क्लोज लूपटा नहीं ए क्लोज लूप रे पिले तीनटा रेजिस्टर आम कनेक्ट करेचे. गोटे रेजिस्टर है R1, गोटे रेजिस्टर R2, गोटे रेजिस्टर अच्छे R3. ये जो सेल जो ईएमएफ अच्छी मनकर ईएमएफ अच्छी ई, सेल जो ईएमएफ अच्छी पिले ई अच्छी, ताले मोर जो करंट फ्लो होची दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव आई करंट. सो रेजिस्टर रे ए टाइप रो फ्लो है आई करंट, एठी भी पिले कोन आसुची आई करंट, एठी भी पिले आसिला आई करंट. सेम करंट ऑपरेट होची सर्किट रे. ओके, जदि आम मेजर करवा ये सर्किट बा ये आम कहे गोटे क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप आम कहे मनकर क्लोज लूप केस रे मनकर मूवमेंट करले ये टाइप रो मूवमेंट करले. ओके, ताले जो पोटेंशियल डिफरेंस किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कहूची टोटल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईएमएफ एंड द एलिमेंट्स इज जीरो. across the EMF and element is 0. okay, एटी जदि पिला में डिफरेंट पॉइंट गुड़ा को नहीं जिबा माने कर A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, एटा को नहीं गली पिले D पॉइंट. ओके, जदि हम ए टाइप रो पॉइंट गुड़ा पिले कंसीडर करनबा त माने ए पॉइंट केस रे जदि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करबा अक्रॉस AB, okay, resistor R1. okay, so what is the potential difference? Potential difference across
A and B. ओके केते आसीबो पिले ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी देखो पिले अलोंग द करंट रो मूवमेंट करलो अलोंग द करंट रो मूवमेंट करले पिले आसिला माइनस आई r1 बुझिला पिले देन सेकंड आसीबा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC पिले देखो सेमते हम अलोंग द करंट मूवमेंट करूचे सो माइनस IR2 ओके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD that equals to minus IR3 okay potential difference across DA जदि DA रे नबा देखो पिले नेगेटिव रु पॉजिटिव को मूवमेंट कलो नेगेटिव रु पॉजिटिव को मूवमेंट कले त माने प्लस EMF आसिला E ओके सो अकॉर्डिंग टू KVL according to Kirchhoff's voltage law total voltage or total potential difference is equal to 0 summation of V equal to केते पिले 0 summation of V हेले तमर केते आसिला पिले वो जे माइनस IR1 प्लस माइनस IR2 माइनस IR3 प्लस E1 equals to 0 plus E equals to 0 okay so that implies to E equal to केते पाइलो पिले ना IR1 plus IR2 plus IR3 okay so that means we can say summation of EMF is equal to summation of a product of resistance and the current okay तल summation of EMF टा का सहित पिले समान आसुची current आउ voltage जो result आसुची ता सहित ही समान आसुची so we can say total EMF equal to is equal to the product of current and resistance okay total EMF is equal to the sum of product of current and resistance बुझिला पिले so this is about Kirchhoff's voltage law okay so depending upon the Kirchhoff's voltage law and current law we can prove Wheatstone bridge circuit problem okay तक हम Wheatstone bridge circuit problem को पिले prove करि परिबा that is application of Kirchhoff's law but what is the main difference between KCL and KVL okay what is the main comparison between KCL and KVL KCL और KVL ले कौन कंपैरिजन आसुची ओके पहले गोटे साइड रे लेख KCL आ गोटे साइड रे मने करा KVL ओके देखो पहले KCL को जब हम मेजर करूचु हम कहू समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 फॉर एनी जंक्शन एंड इन केस ऑफ KVL समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू केते आसीबो ना 0 फर्स्ट पॉइंट वी कैन से हियर समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 हियर वी कैन से समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 सेकंड पॉइंट Kirchhoff's current law always obey law of conservation of charge okay it obeys law of conservation of charge ओके पिले Kirchhoff's जो करंट लॉ टा आसुची Kirchhoff's करंट लॉ टा कहा ऊपर डिपेंड करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओके इट इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी it is a law of conservation of energy okay Kirchhoff's voltage law टा कहा को पहले सैटिस्फाई करे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके सो इट कैन जेतलो Kirchhoff's करंट लॉ नउचे त माने एटा कहा ऊपर एक्वाल रहउची तने एटा हम क्लोज सर्किट केस रे भी अप्लाई करि परिबा ओपन सर्किट केस काहे ना हम जंक्शन पॉइंट को ही मेजर करछे बट एटा ऑलवेज हम क्लोज सर्किट ऊपर ही अप्लाई करि परिबा सो इट कैन बी अप्लाइड both for closed circuit and open circuit
क्लोज सर्किट ओपन सर्किट रे अप्लाई करि परिबा बट हियर वी हैव टू अप्लाई इट इज ओनली अप्लाइड फॉर क्लोज्ड सर्किट एटा पिले कहा को में अप्लाई हबो ना गोटे ऑलवेज क्लोज सर्किट केस रे ही अप्लाई हबो ओके देखो बोले एटा को हम कौन कहूचे केसीएल को कहूचे जंक्शन लॉ एटा को हम कहूचे वोल्टेज लॉ बा लूप लॉ इट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ ओके एटा को हम जंक्शन लॉ बा करंट लॉ बोली कहि परिबा ओके जंक्शन लॉ और करंट लॉ okay so here it is called loop law or voltage law loop law by voltage law so these are the basic comparison of Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law okay so let's measure the applications of Kirchhoff's law ओके एप्लीकेशन देखा गोटे Kirchhoff's law केस रे केमती मेजर करूचे सो मेन एप्लीकेशन ऑफ Kirchhoff's law इज टेकन इन केस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज ओके Wheatstone bridge circuit okay this is the main application of Kirchhoff's law okay so in case of Wheatstone bridge we have to use 4 resistors across the 4 side of a square okay चारटा जो स्क्वायर आम गोटे स्क्वायर फॉर्मेशन करवा जो स्क्वायर रो जो चारिटा साइड अच्छी से चारिटा साइड एक्रॉस रे पिले आम चारिटा रेजिस्टर्स कनेक्ट करवा जो रेजिस्टर्स गुड़ाकर जो रेजिस्टेंस आसीबो ता भीतर गोटे रेजिस्टेंस को आम अननोन रखिबा जेको से गोटे रेजिस्टेंस को अननोन रखिबा देन वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द circuit use okay so it mainly consists of 4 resistors connected across the 4 side of a square okay square में चारटा साइड रे चारटा रेजिस्टर को कनेक्ट करिचे but the important thing is that the current is applied across the one diagonal okay current is applied across the one diagonal whereas a galvanometer is connected across the opposite diagonal देखो पिले करंट आम डायगोनाल मन कर अप्लाई कले ए बी डायगोनाल भितर जो गाल्वानोमीटर कनेक्ट करिछि देखो पिले सेटा सी डी डायगोनाल भितर कनेक्ट करिछि ओके सो करंट इज अप्लाइड अक्रॉस वन डायगोनाल ए बी where as a galvanometer is connected over the opposite diagonal पिले CD diagonal ले में कनेक्ट करिछे galvanometer ओके सपोज देखो पिले एटी केते करंट फ्लो हैला ना आई करंट फ्लो हैला आई करंट फ्लो होची जदी आई करंट फ्लो होची ताले से केस रे में कोन मेजर करि परिबा जेतु आई करंट एटी पिले फ्लो होची आ एठी गोटे जंक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करछि ताले करंट रो डिवीजन आसीबो माने करे पिले एटी I1 करंट गला एठी केते पिले करंट आसिला I2 करंट ओके रेजिस्टर माने करे नै गली पिले P Q R S चारटा रेजिस्टर पिले कनेक्ट कर देले गोटे P गोटे Q गोटे R आ गोटे S P Q R S resistors okay suppose at the junction point C there is I1 current is again divided into two part I1 current देखो पिले दीटा पार्ट डिवाइड होची माने कर गोटे IG जोटा galvanometer आड़ को मूवमेंट करूची आ गोटे जो करंट आसिला पिले I3 ओके I3 टा पिले केते हि जबो I1 माइनस IG सेमते ए जंक्शन को आसो देखो ए जंक्शन को इनकमिंग करंट केते अछि पिले IG एठू करंट केते अछि I2 एठी केते पिले करंट आसिला सपोज I4 इक्वल टू केते पिले आसीबो I2 प्लस IG बुझिला पिले देन एठी पर सेम करंट I3 I4 कंबाइन है कि अगेन I रे प्रोपागेट करि गला नेगेटिव टर्मिनल आड़ को EMF केते नै पिले ई अछि okay so बुझिला Kirchhoff's law so the Kirchhoff's law is mainly used to find out the unknown resistance of an electrical circuit joined in the 4 resistor circuit in which 3 resistances are known and one of the resistance is unknown okay suppose S is the unknown resistance
S is the unknown resistance. बुझेगा पिले एस टाक मनकर मु अननोन रेजिस्टेंस नेली पी क्यू आर अच्छी नोन रेजिस्टेंस सो ये केस रे केमिति मेजर करबा गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओके सो फर्स्ट थिंग देख पिले मनकर प्रूफ को आसीबा सो Kirchhoff's law we have to prove the ratio of the resistors P by Q equal to R by S जो रिलेशन टा में बाहर करबा the across the diagonals the ratio of the resistances must be equal P by Q equal to R by S okay so that's why we can say S equal to that equals to R Q divided by P एस टा केते आसीबो पिले आर क्यू डिवाइडेड बाय पी एटा को हमें प्रूव करबा सो ऐसा प्रूफ को सो इन ऑर्डर टू प्रूव द Kirchhoff's law of Wheatstone bridge we have to take two different consideration as per the Kirchhoff's current law and as per the Kirchhoff's voltage law देखो पिले एठी जदि हम ऑब्जर्व करबा एठी दुईटा क्लोज मेश फॉर्मेशन होउची एटा गुटे क्लोज मेश आ गुटे पिले एटा गुटे क्लोज मेश ओके दुईटा क्लोज मेश फॉर्मेशन होची गोटे ए बी ए सी डी ए आ गोटे सी बी डी सी ओके मनकर ये जंक्शन पॉइंट कंसीडर करी सी आ गोटे जंक्शन पॉइंट अच्छी डी ओके सो इफ वी अप्लाई Kirchhoff's voltage law Kirchhoff's current law for junction C पहले सी जंक्शन ले हमको टोटल इनकमिंग करंट आसीबो कहा सहित समान ना टोटल आउटगोइंग करंट बा समेशन ऑफ द करंट एट दैट जंक्शन इज 0 यदि समेशन ऑफ करंट अछि 0 देखो पहले I1 टा अछि इनकमिंग सो पॉजिटिव आसिला IG टा अछि आउटगोइंग सो नेगेटिव आसिला I3 भी अछि मोर आउटगोइंग सो नेगेटिव आसिला पहले 0 I1 minus IG plus I3 equals to 0 okay for the junction D जंक्शन पाई देख पिले I2 टा अछि इनकमिंग करेंट देन IG अछि इनकमिंग करेंट माइनस I4 अछि आउटगोइंग करेंट दैट इक्वल्स टू 0 सपोज आई टेक एज दिस वन इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2 okay now comes to the close mesh part Kirchhoff's voltage law so if you apply Kirchhoff's voltage law for the mesh A C D A ओके पिले जब हम Kirchhoff's voltage law को अप्लाई करिबा फॉर द मेश अप्लाई KVL फॉर क्लोज्ड मेश ACDA रे पिले माने जो गाल्वान मीटर टा कनेक्टर करिचे माने कर गाल्वान मीटर रेजिस्टेंस अछि G ठाला तार गाल्वान मीटर रेजिस्टेंस करंट केते फ्लो होछि पिले IG तले ACDA रे जे मूवमेंट करचे AC रे हला में अलोंग द करंट मूवमेंट करले पिले I1P ओके देन IG रे भी हम अलोंग द करंट मूव करूचे सो IGG ओके बट I2 रे जते हम D रु A को मूवमेंट करले देख पिले करंट अछि A रु D को तमे मूवमेंट करूचो D रु A को सो दैट इज पॉजिटिव I2R equals to 0 suppose I take equation 3 okay for closed mesh सेकेंड मेश टा कंसीडर करबा पिले जेटा अछि CBDC क्लोज मेश केस रे देख पिले CBDC क्लोज मेश केस रे CB रु जदल मूवमेंट करले I3Q अलोंग द करंट मूवमेंट करूछु सो दैट इज माइनस I3Q ओके देन एठी देख पिले जते B रु D को मूवमेंट करिवो से केस रे आसिला अपोजिट टू द करंट सो माइनस I4S okay then current रो opposite sorry this one is plus I4S then galvanometer रे जतले पिले मूवमेंट करिवो opposite to the current त माने आसीबो IGG equal to 0 equation 4 okay so these are the four equations that we obtain from the electrical circuit so now we can remove the electrical circuit but one thing we have to observe if we consider the Wheatstone bridge at balance condition okay if I consider the Wheatstone bridge at the balance condition so what is the balance condition at the balance condition the potential difference across the C
and the potential difference across the D is equal. Okay, potential difference across the C and across the D is equal. जदि potential across C and D equal आसुची देखो पिले जो galvanometer across the potential difference आसिला potential difference is 0. Okay, at balance condition VC potential of C equal to potential of D, so we can say the current or the potential difference across the galvanometer is 0. If the potential difference across the galvanometer is 0, so we can say current is not drawing. Okay, current flow होनी तमने I0 value केते आसी जीवो 0 आसी जीवो जदि पिले I0 value 0 आसुची, if no current flows across the galvanometer, then we can design the circuit as per the value. Okay, for balanced Wheatstone bridge, for balanced Wheatstone bridge, for balanced Wheatstone bridge, potential difference across galvanometer is 0. Potential difference across the galvanometer is 0, so no current is flowing through the galvanometer. जब galvanometer रे पिले current flow होनी I0 value 0 आसी जाउची तले equation 1 टा केते हे जिवो. Thus equation 1 टा पिले केते हे जिवो ना I1 minus I3 equals to 0, so that implies to I1 equal to पिले I3. equation मन करो 5, I1 equal to पिले पाइलो I3. equation 2 रु केते पाइबा पिले, equation 2 को जदि ऑब्जर्व करिबा I2 minus I4 equals to 0, त माने पिले पाइलो I2 equal to I4. equation number 6. ओके, सेकेंड थिंग जब मैं क्वेश्चन नंबर मेश को आसवा कहा को इक्वेशन नंबर 3 को. ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. ओके, इक्वेशन 3 को पिले लक्ष्य करो माइनस I1P I0 हो गले प्लस I2R इक्वल टू 0, त माने पाई गलो पिले I1P इक्वल टू केते पिले I2R, सो I1 by I2 इक्वल टू R by P. equation number suppose 7, I1 by I2 equal to R by P. Okay, next जदि equation number पिले 5 को आसीबा, सॉरी equation number 4 को, equation number 4 को पिले आसो तले एटी पाइबा केते माइनस I3Q. ओके, एटा 0 हो गले प्लस I4S equal to केते 0, सो I3Q equal to पिले केते I4S. So that implies to I3 by I4 equal to S by Q. S by Q. ओके पिले, बट I1 टा देखो पिले का सहित समान अच्छी, I1 टा मोर I3 सहित समान, I2 टा अच्छी I4 सहित समान, त माने एठी पके देई परिबे I1 by I2 equal to केते पाइला पिले S by Q. S by Q बुझेला पिले. जदि मैं इक्वेशन 7 और 8 को कंपेयर कर दबा, इक्वेशन 7 और 8 को जदि कंपेयर कर दबा पिले तले केते आसी जिवो वैल्यू, कंपेयर कर दियो इक्वेशन 7 और 8. कंपेयरिंग इक्वेशन 7 and 8 one can find S by Q equal to R by P. S by Q equal to R by P, so that is P by Q equal to R by S. Okay, this is called Kirchhoff's law. Okay, this is the condition for a balanced Wheatstone bridge. Okay, but जब हम unknown resistance if S equal to X, S equal to X, that is the unknown resistance, then पिले केते आसी जिवो P by Q equal to R by X. तले X रो पिले केते ही जिवो वैल्यू